Teacher Kalisha. I'm not prepared. आई तो पासपोर्ट में से आगरा का आज के विषय में कुछ कह दो। तो आज हम फिजी के आज़ादी को मनाते हैं ना। आज़ादी हमें कब मिला था? 1917 में, राइट? 1917। लेकिन उसके पीछे एक इतिहास है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि फिजी में क्या हुआ था, हमारे पूर्वजों कैसे फिजी आए, उनके संग क्या हादसा हुआ, उसको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो we all want to know our hereditary ना, we want to know कि कहाँ से हमारी अम्मा कौन है, हमारे पिताजी कौन है, right? We need to know. इसलिए it's important that when we celebrate things like this, आज I think this is 55th year independence of Fiji. But Fiji has a very rich history. इसको जो इतिहास इसको जानना बहुत important है. Now, I don't want to talk about that. We'll probably talk about that later on one day, what our history was. But what I want to say is, today's government in Fiji has got what is known as the Reconciliation Commission. इतिहास में बहुत से दुख रहा, बहुत से पीड़ा, and today we see what happened to Paul and Silas. उनको जब पीटा गया, घाव हुआ था, पीड़ा हुआ था, इसी तरह हमारा भी इतिहास है. There's a lot of pain, a lot of history, a lot of unforgiveness, right? And today, I think we should be celebrating this government that is in power, which has set up the Reconciliation Commission. और उसका एक ही मकसद है कि हम कैसे एक दूसरे से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं. हमारे मन में जो भाव है, हमारे मन में जो पीड़ा है. You remember the days of the coup? You remember how हम लोग सब कुछ बंद करके घर में रहता रहा, डरता रहा. All those things we have bottled up. हमारे भीतर है. Like praise God, we are Christians. We've learned to forgive. We know what it is to forgive. But there's thousands of people who don't know what forgiveness is. अभी भी a lot of people that you talk to, some people say फिजी बारे में नहीं बात करो, नहीं मिलता. प्रभु का बारे में नहीं बात करो. Who cares? Yes, he did it, but he's a changed man now. I'm not advocating for him, but what I'm saying is, this Reconciliation Commission has given us an opportunity to forgive people for what they have done. Like especially Indians. I know I'm not Fiji Indians. We've gone through a lot of pain in Fiji. But it is time now that we need to reconcile with our